Hello everyone, welcome back to my channel The Creative Me. So guys, in today's video we are making this colorful and beautiful wall decor. So without further ado, let's start with the video. Start करने से पहले if you haven't subscribed my channel yet, please do consider subscribing my channel. So things you need for this project are a piece of paper, glue gun, a scissor, a scale and popsicle sticks. If you don't have colorful sticks, then you can use normal sticks too. उसके बाद हमें जो स्टिक का राउंड पार्ट है उसे इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉस में कट कर लेना है एंड देन उसी का मेजर लेते हुए बाकी के सारे स्टिक्स भी कट कर लेने हैं। मैंने सारे स्टिक्स को इस तरीके से कट कर लिया है। उसके बाद स्टिक के दूसरे पार्ट को भी उसी तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद हमें पेपर को मेजर करके उसे इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेना है, विच इज़ 9 सेंटीमीटर इन माई केस, एंड देन बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है विच विल बी अवर बेस लाइन। उसके बाद हमें पेपर पे बेस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्टिक्स को इस तरीके से अरेंज करते हुए फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेना है। अपन स्टिक से कुछ पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। मैंने 2 रो में सेम कलर की स्टिक्स को यूज़ किया है, देन फिर से डिफरेंट कलर की स्टिक को यूज़ किया है, देन फिर से 2 सेम कलर की स्टिक को यूज़ करके इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट किया है। And then I am cutting the extra part of paper. Now let's jump into the next DIY video. For the next DIY, I have drawn this heart shape of pattern on paper.
The two sides of this shape are 11 centimeter and others are of 7 centimeter. उसके बाद हमें स्टिक को 7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कट कर लेना है एंड देन उसी का मेज़र लेते हुए दूसरे साइड्स को भी कट कर लेना है एंड देन उसको इस तरीके से प्लेस करना है और फेविकॉल की हेल्प से उसे फिक्स करते जाना है। Place the sticks like this and then fix with the help of Fevicol. I have made total 3 shapes and now I am coloring it. I have selected 3 colors, which is yellow color, turquoise color and the last one is pink. Now arrange the shapes like this and fix it with the Fevicol.
how beautiful it is looking now. I hope you enjoyed the video. If you do so, then please like, share and subscribe to my channel. And we'll meet you in my next video. Till then, be creative and bye bye.